हेलो एवरीबॉडी। बैंकॉक के अंदर 28 मार्च 2025 के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। 7.7 रिश्टर स्केल का जो अर्थक्वेक है वहाँ पे आया। एक ही बिल्डिंग के अंदर 18 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 78 लोग जो है मिसिंग है, मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, पता नहीं है कहाँ पे गए, शायद मर भी गए होंगे। तो एक ही जगह पे इतना सब कुछ हो गया, एक ही बिल्डिंग के नीचे, और काफ़ी सारे बाकी के स्ट्रक्चर्स भी अफेक्ट हो गए। सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो फेलियर होता है अर्थक्वेक की वजह से, उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करेंगे। 33 स्टोरी बिल्डिंग को बचाया जा सकता था क्या? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का करिश्मा किस तरीके से होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन क्या होता है? और ऐसी दुर्घटना के अंदर वित्तीय हानि और जो जैविक हानि है उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, एक छोटे से कुछ टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारे लोगों की जान किस तरीके से बचाई जा सकती है। इस डिटेल एनालिसिस के लिए ब्रेस योर सेल्फ एंड गेट ऑन स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट। तो बैंकॉक हाईराइज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, उसको किस तरीके से छोटे से अर्थक्वेक के अंदर 7.7 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक, कोई बोलेगा कि सर इतना बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग तो गिरेगी। दैट डजंट मीन एक्चुअली कि 7.7 रिश्टर स्केल का मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ गया तो सारी बिल्डिंग टूटनी चाहिए थी। कुछ ही बिल्डिंग डिजास्टरस लॉस किस तरीके से हुआ। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है, बट अलॉन्ग विद दैट जो एपिसेंटर था वो तो म्यांमार के अंदर था, वो तो बैंकॉक के अंदर तो था ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे किस तरीके से हुआ, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये द प्रिंट मीडिया जो है उनके वेबसाइट्स के थ्रू या उनके रेफरेंसेस के थ्रू हम लोगों को ये वीडियो मिला है। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अर्थक्वेक आ गया, काफ़ी पैनिक सिचुएशन हो गई थी। जो भागने वाले लोग हैं वो देख रहे डर के मारे, और जब भी वो मलबा रोड की तरफ आया तो लोग वहाँ से भी निकलना चालू कर दिए, भागना चालू कर दिया। और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन, लोगों का चिल्लाना, भागना, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ब्रिज जगह पे है, रोड जगह पे है, काफ़ी सारे जो चीज़ें वो जगह पे है, लेकिन एक बिल्डिंग का इस तरीके से टूटना। ये थोड़ा क्लोजअप व्यू है, आप देखेंगे कि जो लेबर लोग हैं वो भी भाग रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट जो चल रही है वहाँ पे रेडीमिक्स कंक्रीट जो ये है ट्रक है आरएमसी का, वो भी आप देख सकते हैं, और लोग भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। तो इसी को डिकोड करेंगे कि क्या क्या चीज़ हो गया है और किस तरीके से इसको बचाया जा सकता था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखेंगे, ये बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 5 मिनट पहले बिल्डिंग थी, 5 मिनट के बाद बिल्डिंग नहीं है। 5 मिनट छोड़िए, कुछ सेकंडों के बाद ही। तो ऐसा क्या हो गया, अर्थक्वेक की वजह से इतना सारा नुकसान किस तरीके से हुआ। ये बिल्डिंग तो है ही नहीं, ये बिल्डिंग है लेकिन आप देखेंगे कि ये यूजेबल नहीं होगी, कोई रह नहीं सकता इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में। तो काफ़ी सारे यहाँ पे देखेंगे कि ये बिल्डिंग काफ़ी हद तक वहाँ पे थोड़ा सा रिपेयर करने के बाद रह सकती है, लेकिन उसके बाजू वाली बिल्डिंग जो है वो टूट गई है, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे उसको तोड़ना ही पड़ेगा। सिमिलरली आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो मजबूती के साथ खड़ी है, बट ये बिल्डिंग जो है वो चूर चूर के, आई मीन लाइक, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे ही किसी ने बम लगा दिया गया है, ऐसा तो नहीं था। अर्थक्वेक की वजह से, कुछ पैरामीटर्स की वजह से नेबरिंग बिल्डिंग्स भी, एक बिल्डिंग रह रही आराम से, कुछ भी नहीं हो उसको, और दूसरी बिल्डिंग जो है उसका एकदम तहस नहस हो गई। इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न भी आप देख सकते हैं इस
फोटोज़ या वीडियोज़ के माध्यम से। तो ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। तो 18 तारीख को जैसे मैंने पहले बताया कि ये दुर्घटना हुई थी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप थोड़ा सा कुछ प्रे करिए कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग पैनिक सिचुएशन में हैं, आज भी हैं। चिटूचाक डिस्ट्रिक्ट बैंकॉक ये लोकेशन है जहाँ पे ये हादसा जो पर्टिकुलरली ये जो बिल्डिंग है उसका हादसा यहाँ पे हुआ है। 33 स्टोरी बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है, उसका ये हाल हो गया। और ये बिल्डिंग थी किसकी? तो थाईलैंड स्टेट ऑडिट ऑफिस हेडक्वार्टर की। तो ऐसा नहीं कि कोई होटल बन रहा था या हॉस्पिटल बन रहा था या कोई किसी का घर बन रहा था या कोई बिल्डर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा था। ये थाईलैंड स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड का ऑडिट का ऑफिस हेडक्वार्टर वहाँ पे बन रहा था। तो ऑब्वियसली जो नॉर्म्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के, सेफ्टी के, सारे जो नॉर्म्स हैं वो डेफिनेटली तो गवर्न होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये सारा चीज़ बिल्डिंग जो है किस तरीके से गिर गई वो देख लेते हैं। तो 7.7 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आ गया था। एपिसेंटर जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 800 माइल्स अवे था, यानी बाहर था। और कहाँ पे था? तो वो म्यांमार के अंदर था। लेकिन कोलैप्स जो है वो ज़्यादातर बैंकॉक में हुआ क्योंकि बैंकॉक के अंदर काफ़ी सारे हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस देखे गए। उस बिल्डिंग के अंदर 18 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ऑन द स्पॉट डेड हो गए। 78 जो लोग हैं वो आज तक मिसिंग है। काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया है, पैनिक सिचुएशन हो गई है। फैमिलीज़ जो है वो वेबसाइट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को खोज रही है कि कहाँ पे हो आप, आर यू सेफ एंड ऑल। हाँ जी, तो इसका यहाँ पे देखेंगे कि एपिसेंटर म्यांमार के अंदर जो 800 माइल्स अवे था, ये जो हम लोगों ने पहले देखा मैग्नीट्यूड 7.7, ये जो अलुवियल सॉइल है, सॉइल के ऊपर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था। ठीक है। और दूसरी एम्पलीफाइड यानी जियोलॉजी, एक जो रहता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, दूसरा रहता है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल यानी सॉइल रिलेटेड पैरामीटर्स रहते हैं, जियोलॉजी यानी रॉक रिलेटेड पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है। तो लोकल एम्पलीफाइड जो जियो टेक्निकल और जियोलॉजिकल जो वल्नरेबिलिटी है उसके लिए भी उसको तलाशा जा रहा है और उसके भी पैरामीटर्स लिए जा रहे हैं। बिल्डिंग बैंकॉक ये जो है सस्पेक्टेबल टू द सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक हाई सिस्मिक जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना जो है, जो प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। इसके लिए इसको डिज़ाइन करना चाहिए और इसके लिए वहाँ पे जो पैरामीटर्स वो लेने चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन कंसर्न जो है तो 30% कंप्लीट एट द टाइम ऑफ कोलैप्स। प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे बोला जा रहा है कि 30% कंप्लीट है, लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो फ्लोर्स थे वो कंस्ट्रक्ट हो चुके थे। मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि ये खबर झूठी है या ऐसा कुछ कि 30% ही काम हो चुका था तो 70% पैसा उसका तो गया ही नहीं है, वो तो किया ही नहीं है। लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है उसका डेडलो लेवल जो ऊपर बढ़ जाता है और उसका जनरली ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक के अंदर भी डेडलो लेवल तो रहता ही है, तो 70% काम हुआ ही नहीं था तो फिर डेडलो लेवल तो था ही नहीं, तो बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन आरसीसी जो है और जो स्लैब्स है वो मेरे हिसाब से सारे हो चुके हैं, खाली फिनिशिंग आइटम्स का कंपोनेंट हो सकता है, ये मेरा पर्सनल अंदाज़ा है कि वो कंपोनेंट नहीं हो गया होगा और उसकी वजह से जो नुकसान है थोड़ा सा कम मात्रा में हो सकता है। इरेगुलरिटीज़, ये जो करप्शन वगैरह वो चांसेस भी हो सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन कंसर्न्स हैं जो जहाँ पे लोकल बॉडी जो उन्होंने ये किए हैं। डिलेज, लेबर शॉर्टेज, पोटेंशियल कॉस्ट कटिंग वगैरह उसके हिसाब से भी हो चुका है। यहाँ पे भी भारत के अंदर काफ़ी सारे कॉस्ट कटिंग अभी भी मुझे याद है कि जियो टेक्निकल बोरवेल एक ही ले लेते हैं, 2-3 चीज़ें क्यों लेनी चाहिए, यानी जो इन्वेस्टिगेशन करना है उसके अंदर से ही कॉस्ट कटिंग चालू हो जाता है। बहुत सारे जियो टेक्निकल के
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के नॉर्म जो है वो ओवरलुक किए जाते हैं, उसकी वजह से जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कम्प्लीटली ज़ीरो भी हो सकता है। जनरली कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका स्वॉट एनालिसिस होता है, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? S स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ, कि बिल्डिंग की ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ यानी ताकत नहीं बोल रहा हूँ, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ यानी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन अच्छा है, इसमें ये चीज़ अच्छा रहेगा, ये रहेगा, तो दिस आर द स्ट्रेंथ्स। और फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर द वीकनेसेस एंड व्हाट आर द थ्रेट्स। तो ये स्वॉट एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर। थ्रेट्स के अंदर अर्थक्वेक इज़ वन ऑफ द थ्रेट, वो कंसिडर की नहीं है, इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गया, ठीक है, इसकी वजह से। और ये किसने बनवाया था? ये एक्चुअली थाई का कोई डेवलपमेंट PCL बॉडी है उसके अंदर, और चाइना रेलवे नंबर 10 इंजीनियरिंग ग्रुप, तो ये दोनों का जॉइंट वेंचर था इसके अंदर, और दोनों जॉइंटली इस चीज़ को डेवलप करने के पीछे लग रहे थे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यानी दोनों का पैसा इसके अंदर लगा था। तो बोल दिया जाता है कि दोनों का जितना परसेंटेज है उतना उनका लॉस भी उसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। पॉसिबल क्लॉजेस क्या हो सकता है इसके बारे में अगर सपोज जानना है तो इनएडिक्वेट सिस्मिक डिज़ाइन, वीक कॉलम बीम जॉइंट्स, इम्प्रॉपर एनफोर्समेंट वगैरह। फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी कंक्रीट की क्वालिटी क्या टेस्ट करेंगे, फिर कॉलम स्पेसिंग एंड लोड ट्रांसफ़र, जो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग डिज़ाइंस वगैरह, उसका पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह, ऑब्जर्वेशंस वगैरह इवेंचुअली आएगी, ऑडिट होगा इस सब का। और उसके हिसाब से और एक्चुअल क्लॉज किसकी वजह से, एक्चुअल कॉज क्या हुआ जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर, इतने लोग मरे, इतने फैमिलीज बेघर हो गई, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑडिटिंग तो बनता ही है। रिस्पॉन्स एंड इन्वेस्टिगेशन, सो इमरजेंसी ठीक है, आई मीन लाइक जो हो गया वो हो गया। अभी इन्वेस्टिगेशन, जो मरे, जो यानी डेब्रिस के नीचे फंस गए, उनको निकालने का सब कुछ ये काम चल रहा है। बैंकॉक गवर्नर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये सब लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं ऑलरेडी, और वो काम चल रहा है। तो ये कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ, इसके लिए ये वीडियो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा आ जाएगा। पर्टिकुलरली जो दूसरा वीडियो है, हाँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये वीडियो, हाँ, फ्रेम बाय फ्रेम देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे ये जो ना, ये लॉन्ग कॉलम्स हैं, दिस आर ऑल लॉन्ग कॉलम्स, ठीक है। ये कॉलम्स काफ़ी लंबे हैं। स्टिफनेस का जो कैलकुलेशन है, इसका डिटेल में हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ताकि आपको भी पता चलेगा कि क्या, किसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है। आप देखेंगे बाजू वाले बिल्डिंग में फ्लोर टू फ्लोर हाइट इतनी ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2, लगभग 3, 3.5 फ्लोर की हाइट है यहाँ पे। जो एंट्रेंस लॉबी, बहुत बड़ा बड़ा ओपनिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे 5 स्टार होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में ये सब कुछ होता है कि एंट्रेंस एकदम ग्रैंड होना चाहिए, बड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े के चक्कर में कॉलम पतले हो जाते हैं और ये दुर्घटना होने के चांसेस काफ़ी सारे रहते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे बाजू वाली बिल्डिंग तो कुछ नहीं हुआ, इसकी वजह से इसको कुछ हानि हो सकती है, बट डेफिनेटली जो गिरी थी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ही गिरी थी। बाजू वाले का ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसको इतना मेरे हिसाब से तो डर नहीं था, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे हाइट बढ़ती है ना, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला ही है 4EI/L, ठीक है। तो L जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसकी वजह से इसका जो स्टिफनेस है, जो स्टिफनेस है, वो स्टिफनेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर लेंथ बढ़ गई है यहाँ पे, जैसे ये लेंथ बढ़ गई है, तो अगर
लेंथ बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये बढ़ने की जगह पे ये कम हो जाता है, ठीक है। तो लेंथ जितनी ज़्यादा है, जैसे कोई भी रीबार आप ले लेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन, अब अगर आप देखेंगे पेन अगर लंबा होगा तो कॉम्प्रेशन में ऐसे कॉम्प्रेस बकल हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, के जो स्टिफनेस है और एल, जितनी लेंथ कम है उसका उतना स्टिफनेस, उसकी ताकत जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो ऑब्वियसली ये लेंथ बहुत ज़्यादा है इसके हिसाब से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा चीज़ देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन वी कॉल इट एज सॉफ्ट स्टोरी। ये सॉफ्ट स्टोरी के बारे में भी बात कर लेंगे। सॉफ्ट स्टोरी क्या है, हार्ड स्टोरी क्या है। सॉफ्ट स्टोरी यानी क्या होता है कि इसके नीचे जो है दैट इज बेसिकली वी कंसिडर इट एज ए फिक्सिटी, एकदम तगड़ा फिक्सिटी सपोर्ट है, यानी नीचे लंपिंग नहीं हो रहा है। जैसे अर्थक्वेक होता है, वेन एवर देर इज अर्थक्वेक, क्या होता है कि द लंपिंग हैपन्स मीन्स द स्ट्रक्चर विल ट्राई टू बेंड इन द अदर डायरेक्शंस, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे झूमेगा, ऐसे ऐसे होगा। To facilitate that, we need ductility. Ductility index ऐसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ चॉक, अपने खड़ू ले लिया जो लिखते हैं ना, और उसको इफ यू वांट टू यू नो मेक दैट इज अ बेंडिंग स्टिफनेस, इफ यू वांट टू सी दैट, इफ यू जस्ट डू लाइक दिस इट विल जस्ट ब्रेक इट डाउन। बट इफ यू टेक द आयरन रॉड, okay, if you want to do, if you are doing something like this, it will start bending, it will not be, it is not a brittle material. Okay, so whenever the earthquake happens, the initial hit of the earthquake happens at this level only, at this level only. So at this level there is a fixity, means एकदम तगड़ा सपोर्ट है। उसके ऊपर जब भी वो लंपिंग होगा, यानी इधर उधर घूमने का जो चीज़ है, एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पोर्शन हैज़ टू बी डक्टाइल इन नेचर। Now ductility comes with, actually there is one thing which we call it as the strength. Now if you are checking the strength of this particular column is very high, no doubt about it. That's why this building is standing. It is witnessing just before the earthquake. Nothing is happening. Everything is full, final and perfect. So strength wise it is there. But strength without ductility, no, strength is there definitely, but ductility is not there. So strength without ductility is meaningless. Strength without ductility, it becomes completely meaningless. It means that you are having huge amount of strength, but you are not able to rotate your neck also like this. For rotating you need to move your entire body like this. So the rotational stiffness to your neck itself is not there. Forget about the other areas. So that's why early in the morning or something, gymming or you do certain yoga and all, so that the body also need to be more flexible. Okay, otherwise just by walk of the staircase or doing certain physical activities, it will create a lot of problems. So body also needs actually the strength, that is one thing, but more importantly you need the flexibility, you need the ductility, because ductility without strength without ductility, it is meaningless. Got it? So that exactly it has happened. The strength is there, but if you see the ductility means the tendency of facilitating this to move in this direction is not there. Again, to move in the other direction, let's say in this direction, it wasn't there. To facilitate that, actually, if I would have been the structural engineer or auditor of this, I would have given the connected beams over here, okay, with certain arches or something like that. It will be beautiful, okay. But at this particular place, since the height is quite bigger, 3 times to be very honest, for as a normal height. If you see generally the height of the residential buildings, 10 to 12 feet is the height. It is 3 times here, and there is no connection in between. At the same time, you will see here there are no, good amount of beams are also not existing. Columns are also, it is quite little tiny.
Okay, that gives the nature that the ductility isn't there. Absolutely, ductility is not there. That's why the shear failure has happened. Now, somebody will say that why, since the earthquake is happening at this particular place, the earthquake is happening in this way, why the building has not fallen in this and this direction? It is just because the building has got a huge amount of self weight. So instead of going in the other direction, the self-weight component is quite big. Now let us investigate what is this. So there is a formula for calculating how much is the force acting on it. So there is a formula for the VB bar, which is the base shear of this particular structure. The formula is Z by 2 as per Indian code, of course. And other international codes are also having similar formulas. So Z by 2 into I by R into SA by G into W. Okay. So what is Z? Z is the zone parameter in this particular structure, which is zone. Now this is a seismic zone. So obviously you will be using the seismic zone related parameters. Alright. So in India, the lowest seismic zone is, let's say, Bengaluru, which is having 0.1. If you take even the moderate parameters, actually, you can take it in the range of 0.16, which is Mumbai and those kind of regions, the high-rise buildings and all are coming, or maybe 0.24. I'll take this as a 0.24 parameter, 0.24 as the parameter, which is little relatively high. It is not the highest. 0.36 is the highest one, but it is relatively higher parameter for the seismic zone area. Importance building, I is the importance one. Now, since it is high-rise building, we generally take it as 1.2 to 1.5. One parameter for the general building, and other parameters are like if the building number of population is more than certain numbers, actually we should go for 20% more importance value. That's why the building got collapsed. And believe me, I mean, all the whatever the people, the Bangkok people, it's a shame on the country also, right? Such a high-rise building is basically collapsing. इतना बड़ा बिल्डिंग ऐसे ही धड़ाक करके नीचे आ रहा है. It is basically nobody would, जैसे बुर्ज खलीफा है फॉर एग्जांपल, एक लाइटनिंग हो जाता है, थंडरस्टॉर्म होता है, बिल्डिंग नीचे आ गया, तो it is not good for the country, right? So obviously importance factor has to be bigger. Now coming to the SA by G, if you see the highest value of SA by G as per the Indian code, you can take it in the range of 2.5, okay? And 2 multiplied by R. R is what? The ductility parameter. Now this is very interesting. R is the response reduction factor. Now since it's a seismic zone, obviously I'll be going for the highest value as per the current Indian code, which is in the range of 5. Even if you go to the UBC 97, I would have gone for 5.5, or in certain cases 6, 6.5, 7 also. People are opting for it, but for that you need a lot of connections and all actually to have that ductility index. If you're not having that, obviously increasing of this particular parameter is quite dangerous, right? So let's calculate this. How much is this and all? Like 0.24 multiplied by 1.2 multiplied by 2.5 divided by 10. So this particular parameter is coming 0.072 into W, which is equal to how much? 7.2 percentage of W. Imagine that the building is having 100 tons. It's not 100 tons. This is just the relative theory which I wanted to talk to you about. So if the total building weight itself is, let's say, 100 tons, only 7 tons is acting horizontally, 7.2 tons. Okay, imagine that you are 100 kg, only 7 kg is acting horizontally due to the earthquake. That's why the building will not fall majorly in the adjacent region. It will be majorly fall vertically because this will be the big boss. Right? So exactly that is what we are witnessing here. All right. Now let us see this carefully. Now you will see that yes, the people have started shouting and all because the sound will come, the cracking and all. Actually, we call it as the stiffness modification factor and all. Cracking has happened. Obviously, you will see that there is a failure at multiple locations. There is no, I mean, yes, there is a failure here, of course, that has happened, but sudden damage has happened at many places, and particularly at this place.
That's why the building has, was having a shear collapse. But the damage has started at this particular place, and which has, created so many cracking phenomena instantaneously, just within certain fraction of the second. It has created the impact on the upper floors also, and immediately that's why it has came down. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जोन जो है, उसके अंदर आपका अर्थक्वेक का जो फोर्सेस की वजह से इंस्टेबिलिटी हो गया, और वो जो इम्पैक्ट है वो अपर फ्लोर के ऊपर गया, और अल्टीमेटली जो बिल्डिंग है वो नीचे आ गया. ऑलराइट. हाँ, अभी सॉफ्ट स्टोरी क्या है, व्हाट इज द सॉफ्ट स्टोरी, एंड हाउ सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी, यू नो वी कैन एबल टू सेव, किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है, किस तरीके से उसको इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है. उसके लिए कुछ शेयर वॉल्स ऐड करनी होती हैं. वी हैव टू ऐड सर्टन शेयर वॉल्स. ओके, इंस्टेड ऑफ ए टाइनी लिटिल कॉलम्स, अगर आप यहाँ पे शेयर वॉल ऐड करते हो, यानी यहाँ पे एक वॉल ऐड करते हो, ठीक है. हाँ, आई नो कि पार्किंग का थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है, बट इंस्टेड ऑफ वॉल, ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ है. नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन है कि ब्रेसिंग. ब्रेसिंग यानी ये पोर्शन को कनेक्ट करना, ये पोर्शन को एटलीस्ट इतना तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि पार्किंग को भी अफेक्ट नहीं होगा. राइट. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉलम्स, द कॉलम एक्चुअली कॉलम को तगड़ा करना है. हाँ, अभी देखो, ये एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको. अभी आप देख लो, ये मेरा हाथ है, ठीक है. ये जो है, दिस आर बेसिकली द जॉइंट्स. तो ये जॉइंट छोटे हैं स्टिफनेस वाइज, इसके वाइज, इंस्टेड ऑफ दिस जॉइंट, करेक्ट. तो इसका जो स्टिफनेस है, इसका जो रोटेशनल ये वो सब स्टिफनेस है, वो भी कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू दिस वन. राइट. इसका भी जो स्टिफनेस है वो कम है कंपेयर टू दिस वन. आई एम नॉट अ सलमान खान और समथिंग, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट इसका जो स्टिफनेस है, लिफ्टिंग ये वो सब करने की वजह से, इसका एबिलिटीज़ जो ह्यूमन बीइंग को करनी पड़ती है, उसकी वजह से इसका जो स्टिफनेस है, ये यहाँ पे दे सकते हैं क्या, और ये यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं दे सकते. चलेगा क्या, नहीं चलेगा. सेम थिंग, ये जो बिल्डिंग के अंदर आपने देखा रहेगा कि ये जो, दिस इज बेसिकली द कॉलम, द सेम actually column is given here without any proper this thing, and the height of the structure is also very much little higher. So this generally generates the soft story impact or the effect. Understood. So उसको किस तरीके से बचाया सकते थे? reduced open spaces, base isolations. base isolations यानी क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसे स्लाइड होता है. ये बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं. बेस आइसोलेशन सिस्टम ना बहुत कम मात्रा में यूज़ होती है, कि थोड़ा सा जैसे स्केटिंग जैसा, थोड़ा सा द फोर्सेस विल बी resulted transformed into the displacements. That is also very dangerous and risky, but some of the structures it is generally permitted, generally for the high rise building, but permit करना ठीक नहीं रहता है उसमें. ठीक है, उसको अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग करना होता है. दूसरा है कि जो अलग अलग जो कोड है, उसके अंदर ये सॉफ्ट स्टोरी के क्या नॉर्म्स है, क्योंकि सॉफ्ट स्टोरी वाज वन ऑफ द रीजन, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. छोटा सा ब्रेसिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली वुड हैव सेव्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. तो क्या नॉर्म्स है, नीचे का स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, ऊपर का स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा है, और बीच में कुछ भी दिया नहीं है. यानी जहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे आपको स्टिफनेस बहुत अच्छा चाहिए, दिया नहीं है. ये इधर दिया है और ये इधर दिया है. This has been given here and this has been given here. So obviously, there will be the damage that has happened. So in Indian code also, it is stated that if the 70% the story stiffness is there, which is like mean above, if the difference is more than 70 to 80%, of the above 3 floors, if you want to take the 3 floors, then the 70, if you want to take the, if you want to take the single floor, then 80%, or if you want to take basically the above average 3 floors, then it can be like a 70%. That much if the difference is there in the stiffness, obviously it will lead to the soft story.
In the UBC 97 also, the 70 percentage norm is there and 80 percentage norm there is same. It has been copied to the Indian code also. Similarly, you can see the ASC code also. You will see the 70-80 percentage norms are there. Extreme soft story, actually, if it is there, then the 60 percentage of the story above or less than 70 percentage of the story stiffness of the above 3 floors. If it is there, then it is considered to be the extreme soft story. Right? So what are the different soft story norms are given, and many areas it is given already in the code and all actually, but it has not been taken care. NTC code, which is Italian code, it is there. Australian code and NZS code is there. National Building Code, Canada NBCC code, it is there. Turkish code, it is there. In Turkish code also it is there, but if you see the recently certain earthquake has come to the Turkish area and so many structures got damaged. So many places these codes are there. Thailand also there is a seismic code is there actually, where 70-60 percentage of this is there. The norm is there, but implementation, ED, Enforcement Directorate, that is there in India. Similarly, that unfortunately it was not applied properly. So structural designing drawback. It's not a contractor's profit 100%, but it's a designer's profit. So but it is not a contractor's fault, okay, but it's a designer's fault. Okay, why? Because he has not given that, otherwise the contractor would have done on the site. All right, now this is the soft story stiffness. If you see that this is OST and LMR, this is 33-story building, and in this, at this particular place, you will see that the stiffness at this place is quite bigger and stiffness at this place is quite lesser. So this is the value of the stiffness. If the difference is so much, obviously, you need to do certain things at this particular floor, but it was not done. That's why the collapse has happened. All right. So these are the norms. Here also you can see that the example of the soft story graph, and automatically the load path also will become similar to that. Now here are some amplified version of the soft story. If the soft story is there, to karna kya hai? If the soft story aaya hai, if there is a soft story, then you need to improvise the earthquake. You need to magnify the earthquake loads actually to match the standards, to take care of those particular areas, or if it is, or it should not be falling into that particular category. Understood? So ASC code and all, actually they are saying 1.5 times the extra load that we need to see. UBC 97 is also saying the magnification factor as 1.5 and all actually. So there are so many magnification factors are given. Based on that, we need to deal with this. So here also you will see that there are no bracings. That's why the soft story function or the weak story function will be applied. So that's why this cross bracings are given generally. Understood? So at the base, wherever this kind of things are there, it is preferred to give the cross bracing. लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च होता है ना, पैसा जा रहा है इसमें, तो किस तरीके से करेंगे, ये प्रॉब्लम है. इसकी वजह से अगर आपने कुछ ऐसे नॉर्म्स दिए रहते हैं, कुछ छोटे से जो डिटेल्स है, वी कॉल इट एज द परफॉर्मेंस बेस, उसके बारे में भी बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रोवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द इवेंट. तो परफॉर्मेंस किस तरीके से किया जा सकता है? Yes, with the help of CSI, actually, we got this particular slideshow, in which you will see the force is there and the deformations are there. As the force is increasing, the deformations also will increase, and there is a resistance. Okay, is the resistance is linear or is the resistance is non-linear? Based on that, actually, the structural behavior will be considered. तो ये किस तरीके से होता है? पहले तो इलास्टिक जोन होता है, फिर इलास्टिक प्लास्टिक जोन होता है, एंड देन देयर इज अ स्ट्रेन हार्डनिंग. फॉर एग्जांपल, दिस इज द कंप्लीट इलास्टिक जोन, and this becomes the elastoplastic, and this zone becomes the strain hardening impact. Like that, actually, this is very difficult basically to calculate. So that's why this has been idealized this way, particularly in the software and all, to get the desired results. Similarly, you will see that the elastoplastic behavior, how does it work? So this particular graph is known as hysteretic behavior. Okay, we call it as the cyclic behavior. Means it is a linear, non-linear, linear, non-linear, linear, non.
Like this is a cycle, and then there is a failure that happens. Understood? Cycle means what actually? Imagine that there is a bicycle that you are trying to ride it. Imagine that there is a bicycle. Okay. Understood. So at certain moment, what will happen is, so imagine that you are riding on this. So you will see that whatever the forces that you are applying it at this particular location, based on that, the cycle is moving. After, because how much is the force that ever you are opting, based on that location, the force only the cycle is moving. But after some time it becomes non-linear, means without using this also bicycle is moving. That becomes a non-linear. And sometimes it becomes so non-linear that you need to apply the brakes to stop it. So that becomes like a failure. Understood? So hysteretic graph is basically, we need to read it in this manner. So as long as you don't want the failure to happen, so as long as is there, actually you need to go through the linear option only. The moment it goes to the non-linear or the failure option, it is considered to be the failure. That's why where is the non-linear hinges are forming. What are the different types of hinges and all are there, that actually this is that study. So moment rotation relationship, idealization moment relationship, then you will have the ductility, brittleness, partial ductility, ductile nature, different capacities are there, different sections are there. Based on that you will see, based on the FEMA clauses, the building has to be designed basically for the operational. Later on, if even if after the earthquake, if it is not operational, it should go to the immediate occupancy, which very minor differences or changes would be there, and you will go to the immediate occupancy. Otherwise it should go to the life safety. Currently what has happened is, forget about collapse prevention, it has become like a collapse only. So more and more damage will happen if the performance levels are not addressed. And if you, many, I mean, I'll tell you, more than 99.9% of the building, people are not using the performance based design only. Okay, you will use the performance based for your mobile. To protect my mobile, I'll be adding whatever the cover and all actually, so that it doesn't create any problem. Even if it falls down, it's fine. Right? So for 1.5 lakh rupees mobile also, you will be so protective for the mobile. But for the building, the person who is having 1.5 lakh rupee mobile, obviously the structure where he is living, it will be around 4-5 crores, 10 crores minimum. So that building you are not designing, you are not checking the performance. Okay, so this kind of situation will happen if the performance levels and the performance based rating and the design, performance based design is not getting carried out. In most of the cases, particularly in India and abroad also, I have seen many structures in many different parts of the world. Many people are not doing performance based design. That's why the structures are failing. That's why such kind of ignorance is happening. So performance levels, what are the different performance levels are there? How the performance level need to be checked? What is the ASC 41 model? Okay, what kind of deformations are there? What is this particular thing? This is immediate occupancy. Then you will go to the CP, life safety, and the collapse prevention. This is basically is the life safety, and this one is collapse prevention, right? So at least the bicycle is going from here to here, means even the earthquake is coming, the building is going moving in this direction. At least in that region you should be designing. Otherwise, the forget about the resistance, the building is suddenly getting collapsed. No matter what is the force, actually the collapse becomes very obvious. Right? So such kind of things are happening, particularly in the structural modeling, analysis and design. And there are so many ratings are there. Based on that, there is a beam model, there is a column model, there is a shear wall model. So many different models are there. Based on that, you need to really calculate this. There are many types of non-linear analysis you need to take. Non-linear time history analysis, FNA, which is the fast non-linear analysis. So many different types of analysis you need to do.
pushover analysis also you might require to do to see that the building behavior is getting controlled. I'm sure that, otherwise, so many people died. Millions of dollars actually is, everything has gone. Forget about it. You have to just clean it up. You have to put a lot of money to clean it up also, right? So such kind of very costly structures, and the entire investment is gone in vain. That will be happening if you are not doing such kind of projects. Not such kind of, actually I would suggest that even if you are designing a villa for your own purpose, you should do the performance based design. Okay, so with this particular incident, I'm sure that you viewers will do the performance rating for your own structure. If you are not doing the performance based designing, then such kind of project, nobody would like to get buried before the time. Am I right? All right. So obviously such kind of analysis is required. And if you do that kind of analysis, whatever the measures need to be taken, believe me, the cost of that would be hardly not even 5%. What is the cost of this? Compared to the cost of the mobile, the cover cost is hardly how much? 1 or 2%. Same way it will happen. 2 to 3% only will be the cost of this additional benefit that we are giving for to improvise the quality of the or the performance rating of the structure during the hurricanes, during the high wind tides, during the flood, during the the seismic activities. Obviously, it will give the increase of life period also would be there. Instead of just 20, 30 years, the life of the building will go to 70, 80, 100 years and all actually. So these are the areas that are really concerning, alarming. I'm sure that with this particular video, many people will understand this and will try to incorporate all this. If you need some of my help, please ping the comment section, give your comments and all. And if you really want to learn such kind of things, get in touch with us. Thank you so much. Bye-bye.